ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਮੌਨਸਨ ਮੈਸ਼ਅਪ ਦੀ ਵੀਆਈਪੀ ਲਾਂਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਾਤ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਤਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗਾਇਕਾ ਜੋਤਿਕਾ ਟਾਂਕਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਲੀ ਫੋਜ਼ਰ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਭੀੜ ਉੱਠ ਕੇ ਨੱਚਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਖਾਣ ਪੀਣ ਅਤੇ ਸਨੈਕਸ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰਹੀ। ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਲਾਂਚ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਰਾਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਪਾर्टी ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨਾਂ सितारियों वालों की कुछ कहा जा रहा है, सुनते हैं। बॉलीवुड मॉन्स्टर मैशअप के रेड कार्पेट पे आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं पूरी यहाँ कम्युनिटी यहाँ पे कनाडा में, कैसा लग रहा है मैम? मुझे एक्चुअली इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है। मैं एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इतना प्यारा बॉलीवुड हिंदी वाला माहौल मुझे कनाडा में देखने मिलेगा। मतलब इंडिया को मिस नहीं करने का मौका मिल रहा है यहाँ पे। यू गाइस आर डूइंग सो वेल एंड इट्स सो गुड टू सी दैट हाउ मच यू लव इंडियन म्यूज़िक एंड बॉलीवुड। जब हम बॉलीवुड की बात करते हैं, आपके अकॉर्डिंगली क्या है डेफिनेशन बॉलीवुड मॉन्स्टर की? अच्छा, जो हमारा शो है, शो की भी और बॉलीवुड की भी आपकी क्या डेफिनेशन है? बॉलीवुड मेरे हिसाब से इंडिया के जो भी इमोशंस होते हैं ना, या इंडियन लोगों के जो भी इमोशंस होते हैं, उन सब को दिखाने वाला या एक्सप्रेस करने वाला जो म्यूज़िक है ना, वो बॉलीवुड है। सो बॉलीवुड में मुझे बहुत सारे प्यारे प्यारे गाने गाने का मौका मिला है। तो आई थिंक बिकॉज़ हम यहाँ पर बॉलीवुड को ही सेलिब्रेट करें, तो आई एम गोना सिंग ऑल माई बिग हिट्स जो सभी लोगों ने प्यार दिया है मेरे उन सब गानों को। तो उन्हीं को मैं वो सब गाने सुनाने आई हूँ यहाँ पर, जैसे कि पल्लो लटके, मुंगड़ा, ओ मेरी लैला, खड़के गिलासी, इश्क दे फनियर, तुम पे हम तो मरे जा रहे हैं, एक चुम्मा एंड सो मैनी मोर सॉन्ग्स। एंड देन ऑल्सो सिंस आई एम अ पंजाबी, तो पंजाबी गाने भी मेरे जो हैं, जैसे कि बाजरे दा सिट्टा फिल्म के गाने हैं, सुरमेदानी, सारी रात तेरा तक दिया राह, फिर जिन्ने सा कंधा कच्चियाँ ने, सो ऑल दीज काइंड ऑफ सॉन्ग्स एंड ऑब्वियसली ऑल द अमेजिंग आइकॉनिक क्लासिक हिट्स, वो भी सब मैं गाने वाली हूँ। जब हम ऐसे फेस्टिवल्स की बात करते हैं, यहाँ पे पूरा कल्चर इकट्ठा होगा, इंजॉय किया जाएगा, आपको लगता है ऐसे फेस्टिवल ज़रूरी हैं कनाडा में? मुझे लगता है कि यार ये तो हर जगह होना चाहिए। ये इंडिया में क्यों ऐसा नहीं और होता है, वहाँ पे भी होना चाहिए आई थिंक। एंड वहाँ पर बॉलीवुड मॉन्स्टर मैशअप अगर उधर भी होता रहे तो बड़ा मज़ा आ जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। हमारे फैन, आपके जो फैंस हैं वो भी देख रहे हैं, हमारे दर्शक भी आपको सुनना चाहते हैं, अगर 2 शब्द उनके लिए गा दें प्लीज़। ज़रूर, चलिए आप लोगों के लिए गाती हूँ। तुम पे हम तो मरे जा रहे हैं, मिटने की जिद किए जा रहे हैं, तुम पे हम तो मरे जा रहे हैं, मिटने की जिद किए जा रहे हैं। आई एम रियली फीलिंग ग्रेट और यहाँ पे कनाडा में आके अपनी कम्युनिटी को प्रमोट करने का हमें मौका मिला है। सो वी आर रियली फीलिंग ग्रेट। बॉलीवुड हम सबकी रगो रग में है। सो बॉलीवुड इज़ लाइक यू नो इमोशंस एंड एवरीथिंग इज़ देयर। सो यू कैन बाय सिंगिंग आप उसको बहुत अच्छे से बॉलीवुड को प्रेजेंट कर सकते हैं। सो बॉलीवुड इज़ लाइक फॉर मी एवरीथिंग। जी, जब हम आपने यहाँ पे परफॉर्मेंसेस हो रही हैं, दो दिन पूरी परफॉर्मेंसेस चलेंगी, Yes. कुछ स्पेशल आपने प्रिपरेशन की है उनके लिए? येस, डेफिनेटली आई हैव प्रिपेयर्ड सो मैनी स्पेशल थिंग्स। बॉलीवुड तो है ही, बट साथ में बीइंग गुजराती बॉलीवुड गरबा भी आई एम परफॉर्मिंग। यस जी, आज की रात मज़ा हुस्न का आँखों से लीजिए। जी, आपको लगता है ऐसे फेस्टिवल्स और होने चाहिए कनाडा में? यस, डेफिनेटली। मतलब जो अपनी कम्युनिटी को इतना आगे कर सकता है, तो डेफिनेटली हर एक कम्युनिटी को, एशियन कम्युनिटी को प्रेजेंट करने के लिए ऐसे फेस्टिवल्स होने ही चाहिए। So Bollywood Monster Mashup, I mean, it's kind of in the name. So what we have is Bollywood. So everything we do here is rooted in Bollywood. The monster part of it is the fact that we do it bigger and larger than life. So, you know, if anyone's been there, I'm sure a lot of reviewers have seen the festival. We have tens and tens of thousands of people that come out. We have an amazing stage light show production. We are known for bringing, for the first time ever, Bollywood stars year after year after year for their premier Canadian performance. And then the mashup is the little extra twist. So, you know, we're here in Canada. And so what we like to do is we like to present Bollywood with a special sort of fusion element. And you're sort of getting a hint in the background here, we have our Bollywood Monster Quartet.
So we have here, non-Indian musicians, but they are playing Bollywood songs. Oh, that's Lavaris, Apni To Jaise Taise happening right now. So, and when you come to the festival, you're going to see all sorts of acts like that are doing special sort of fusion acts. In fact, we have a little special theme this year, which we are doing Caribbean meets Bollywood. And so there's lots of great stuff happening. We got fantastic acts. So not just for the Punjabi viewers out there, the Gujarati viewers, the Tamil viewers, also our cousins that are in the West Indies, Guyana, come on down because this festival is for you. First of all, you're so correct for bringing up the fact that we have an amazing team. This is not my show, this is their show. We have a team that does amazing work all year round. It takes over a year to organize a festival of this scale. And on Friday, just to give you an idea of some of the acts that are happening, we're going to have, for the first time ever in Canada, Nirali Fauzdar. She is known for being the first and only female Gujarati artist ever on Indian Idol, and she's going to perform a special Gujarati set for the Gujarati fans out there, along with her Bollywood hits. And then on Saturday, we have, for the first time ever in Canada, Jyotika Tangri. People know her for the song Palo Latke. She's a Zee-Cine Award winner for Best Female Playback Singer, and she's also performing for the first time in Canada, and she's going to do a special Punjabi set for everybody. But that's not all we have. We also have like 50 food vendors from all over. You like momos, you like kebabs, you like, sugarcane juice. We got food from Nepal, Tibet, Himalaya, Tamil Nadu, Punjabi food, Gujarati food, Bengali food, you name it. It's all here. Hyderabadi food, everything is here. And we also have an amazing family programming. So our family stage, which is brought to you by Tim Hortons, is we're going to have face painting. We're going to have an inflatable slide. We have an entire stage with lots of performers. So families should really come early. So come at 2 p.m., 3 p.m., 4 p.m., catch all the kids' programming, and then stay for the Bollywood concerts, and you'll see the first-time performances from amazing artists. Talking about these type of events, you think that these type of events are right now required in Canada? You know what? Bring It's the community together? yeah. It's. I would say that it's. So this is actually our 15th year doing this festival. When we launched this festival, there was no Bollywood festival anywhere. And so we're really happy that we were able to bring this to the community. And now, we have lots of different South Asian festivals with lots of different flavors, and that's amazing. And the community has grown a lot. And I know, listening to the stories from my parents growing up, because when they came here, it was back in the 60s. And in the 60s, you could not get Indian food anywhere. There was no Indians anywhere. I remember my mom telling me if she saw a brown person anywhere, she went to them, "Are you from India?" Now, we are here, established, conquering so much. I want to do a shout out to the international students that are working so incredibly hard. No one knows how hard it is to establish themselves. They pay these amazing tuition fees and then they come here, and we really want to give all these generations a taste of home. For them to come and experience a mela, make them feel like they're at home. And in terms of the importance, it's important because in the 905 area, South Asians are the largest ethnic group of all ethnic groups. So we are the major consumer. We are the major payer of taxes. So we should be out there telling everyone we're here so that our government leaders, the businesses understand that they should realize that this is your base now, and come dance with us, sing with us, eat our food. We are welcoming, and everyone is always welcome, and that's our sanskar and our philosophy. It's always been a fantastic experience. I've been coming to the Bollywood Monster Mashup for over 15 years now. Vikas and the rest of the Monstrosity team always put on a fantastic experience. If you haven't been, you have to go to Celebration Square in Mississauga, Ontario. Tens of thousands of people come out every year. Fantastic activities, worldwide, performances from great artists. It's really the place to be this July. So, go ahead. What's your Bollywood thing? Oh God, so much. I mean, I've always been partial to, certain Desi musicals, certain movies. Shah Rukh Khan is obviously known worldwide over, and he was a fantastic actor. So just to have that level of talent and caliber of talent come in with the people who are here tonight at the VIP launch, it's going to be a fantastic experience. बहुत चंगा लग रहा है जी. I feel honored to be here. बहुत चंगा लग रहा है. बड़े अच्छे बंदे मिल रहे थे. I feel very much good here.
मेरा ख्याल है कि मैं कोई पिक्चर नहीं छड्डा बॉलीवुड की। आई लाइक ऑल द मूवीज। ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰਿਟ ਐਕਟਰ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? माई सेल्फ। हाँ धर्मेंद्र वो भाजी बहुत वधिया ने जी। देखो जी सीनियर वास्ते तो यहो प्लेटफॉर्म चाहिए हमें। हाँ कनेक्टेड वी नीड कनेक्शंस तो वी अप्रीशिएट सच प्लेटफॉर्म सच कोजन सच इवेंट्स एंड दे आर ऑलवेज वेलकम। ਬਹੁਤ ਸੁਨਹਿਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੇਟੈਸਟ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਲਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀਰੋਇਨਸ ਮੀਨਾ ਕੁਮਾਰੀ, ਫਿਰ ਸਾਧਨਾ ਆਈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹੀਰੋਇਨਸ ਨੇ। ਸੋ ਬੜਾ ਫਰਕ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨੈਚੁਰਲ ਬਿਊਟੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਮੇਕਅਪ ਵਾਲੀ ਬਿਊਟੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ देयर इज़ कंपैरिजन। ਪੁਰਾਣੇ ਪਹਿਲੇ ਗਾਣੇ ਬੜੇ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਔਰ ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਓਰੀਐਂਟਡ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੁਣੋ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕਦੀ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਲੇ ਇੰਨੀ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਨੇ। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो आई हो, बाहर बन के छाई हो। हवा ज़रा महक तो ले, ये दिल ज़रा धड़क तो ले, ये शाम ढल तो ले ज़रा, ये शाम ढल तो ले ज़रा, ये दिल संभल तो ले ज़रा। मैं कोई गैर तो नहीं, दिलाऊं किस तरह यकीन, यही कहोगे तुम सदा के दिल अभी नहीं भरा जो खत्म हो किसी। बहुत अच्छा लग रहा है बॉलीवुड मॉन्स्टर मैश। आई थिंक इनका काफ़ी सिग्निफिकेंट ईयर हो रहा है इस साल। विकास कोहली डज अ वंडरफुल जॉब विद इट। एवरी ईयर इट्स गॉटन बेटर एंड बेटर एंड बेटर। आज जो स्पेशल का VIP किकअप, मैं लास्ट ईयर भी आई थी, वॉज अ ब्यूटिफुली डन वेल ऑर्गेनाइज्ड इवेंट। He always has the artists and etc. also present, and really I think for our community in Peel, as you know, it's very vibrant. We have so many things going on, and I think it's really important that such festivals exist because they allow us to come and celebrate our culture. We're very lucky we live in Canada that wants us to celebrate our culture. So these festivals in the summer, and by the way, it's free at Celebration Square this weekend. So come on out with your families and enjoy, and I'm always proud to see these grow and have much more success. Thank you. देखिए Bollywood has, I mean जो stories हैं, जो movies हैं, they're defining culture for many of us, right? हम grow पर जैसे we've grown up in a different generation, the young generation is growing up very differently. But जैसे इनकी movie posters भी लगी है, everybody has special memories attached to them. Everybody remembers the first time they saw Hrithik Roshan, okay? Because I can tell you when I remembered. Or the first Shah Rukh Khan film that they saw. So these are all part of our memories, they're special memories. And I think the idea behind it is, in many ways, they've defined culture, they've defined fashion, they've defined who we are. And today's stories are starting to tell the real story of what our culture is about. And I'm happy about that too, because the stories can be everything from fun, because sometimes the story doesn't have to be serious, it can be just pure fun. But sometimes the story has to tell what's happening in our community. And I think Bollywood is doing a good job of taking a bit of both. Like, हर तरफ से, मतलब जैसे कहते हैं ना कि हर एंगल से ये बातें हो रही हैं, फिल्म्स में हो रही हैं. आपको तो पता है, like we used to look
afford to going to films, and I know people still do. So to me, Bollywood is all about what it needs to be for you. I came to this event last year and I completely loved it. The culture, the experience. So I was fortunate enough to get an invite to come back again this year, and I was excited to come back, especially if there's some live music. That was my favorite part. To be fair, I'm actually myself half Indian, and I've been watching movies since I was a little kid with my dad's family. So I can just remember the colors, the music, the dance. Those are my favorite. I think they're very important in Canada, and I feel that this was a great representation, especially with last year having the first one, and you can already see the difference and how it's expanded this year. कैसा लग रहा है यहाँ पे पूरी कम्युनिटी का साथ में आके, और कैसे देखते हैं इस चीज़ को? बहुत सारे लोग हैं, फूड इज़ देयर, सो वो एक एक्साइटिंग चीज़ है। और अभी मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लोर भी नहीं की, इतनी सारी चीज़ें कि समझ नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करें, बट आई एम सुपर एक्साइटेड। आपकी अकॉर्डिंगली आपकी डेफिनेशन क्या है बॉलीवुड की? एनीथिंग दैट्स ड्रामा, food, drinks, emotions, love, that's Bollywood. दो दिन ये इवेंट्स चलेगा, कोई आप पर्टिकुलर देख रहे हैं कि जिनको आप स्पेशली सुनना चाहते हैं? निराले जी का मैं हेयर एंड मेकअप कर रही हूँ, सो ऑफ कोर्स आई विल बी कमिंग फॉर हर। ऐसे जब हम फेस्टिवल्स की बात करते हैं, आपको लगता है ऐसे फेस्टिवल ज़रूरी हैं कनाडा में? बिल्कुल ज़रूरी है, बिकॉज हमारी कम्युनिटी ऑलरेडी इतनी बढ़ रही है, सो वी नीड दैट होम वाली फीलिंग। So absolutely, yes. तो आज हम इकट्ठे हुए हैं for the VIP reception for the Bollywood Monster Mash, and it's just so exciting. Sub communities आए हैं, it's not just the Indian community. Everybody's excited about Bollywood. They love Indian cinema, and so it's going to be a very exciting evening, and I'm so happy to be invited to be a part of this. Okay, जो artists हैं वो खुद entrepreneurs हैं, right? So हमारे local भी international artists are they're also small businesses. So बड़ी खुश होंगी उन्होंने इतने आके देखती है, and also videographers, our media people, सब बहुत ज़्यादा लोग हैं जो small businesses हैं, and they have a few employees, some have 100 employees, and when we see जो हमारे लोग यहाँ कनाडा में they are spotlighted, and they have the ability to actually be in Canadian movies और Indian movies भी है, बड़ी अच्छे लग रही है। ये मैं 10 साल से आ रही हूँ ये शो देखने। It's a wonderful show. The local dancers, the singers are amazing. This year I'm really excited to see Jyotika Tangri. She sings one of my favorite songs, Kanda Kachiya Ne. So I'm really excited to see her perform. What's your definition of Bollywood? Bollywood to me is honestly the 90s. That was for me the golden era. It was my favorite era of all the movies. All my favorite movies come from the 90s. And Shah Rukh Khan, I would say Shah Rukh Khan is the definition of Bollywood. Talking about this festival, you think that these type of festivals are right now required in Canada? Oh, definitely they're required in Canada. I think that we have such a huge population in Canada, in Toronto, Mississauga, and I think the public demands it, right? So we need it. It's required. Thank you so much. You know, I've gone to every one of the events at Celebration Square. I always come to the kickoff, and I can't be more proud of all the volunteers that work all year round to make sure that this is a success. I have, and those women are gorgeous, and I love the outfits. I love the acting. They're just so inspirational too, that women have power and that they can be whatever they want to be. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਪਿਕਚਰਸ ਕਾਫੀ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਪੁਰਾਣੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਹਿਮਾ ਮਾਲਿਨੀ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਐਂਡ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਇਵਨ ਰਾਜ ਕਪੂਰ ਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਣੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਗਾਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾ सनम अगर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बार, झूमने लगेगा आसमां, झूमने लगेगा आसमां, झूमने लगेगा आसमां। Congratulations to all the organizers here. थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लग रहा है इतने सारे लोगों को देख करके। कुछ लोग तो एक्चुअली ट्रेडिशनल अटायर में आए हैं और कुछ लोग वेस्टर्न अटायर में आए हैं, बिकॉज आई थिंक द ड्रेस कोड इज़ सेमी फॉर्मल. I really love, and outside I am waiting for the pani puri and the chaat outside. No, for sure, it's so nice to see इतना culture, इतने different लोग, इतनी diversity देख के बहुत अच्छा लग रहा है. It's an amazing event, and of course I'm looking forward to all the chaat as well.
Absolutely. I think diversity and celebrating diversity इतनी important है यहाँ पे, especially हमारे लोगों के साथ में, to promote our culture and diversity. It's really, really important. I would say there is a lot to see. अभी तक जो बाकी लोगों को मालूम है वो आई थिंक ऊपर सतही तौर पे मालूम है, उनको डीप डाउन जो हमारे कल्चर्स और हमारे इतने सारे फेस्टिवल्स होते हैं और छोटे छोटे और बहुत सारी चीज़ें जो इवन हम भूल चुके हैं, वो सारी चीज़ें सबको मालूम होनी चाहिए. तो या डेफिनेटली दिस इज़ समथिंग दैट I think Canada is proud of, multiculturalism, and which is what, like, you know, it's promoting, and it is being done. It's not just, you know, saying, it is actually being done, which is very good. I love Bollywood Monster Mashup. It's in its 15th year right now, and it's been really cool to see it grow. I've gone to it for so many years, and I'm excited for this weekend. What's your definition of Bollywood? Bollywood is fun and color and lively and music and bringing people together. Doing these type of festivals in Canada, you think that these type of festivals are required right now in Canada? They're really important in Canada. I think there's such a booming South Asian population, and I think it's really important for people to have entertainment that they recognize and feel comfortable with and are excited to see that reminds them of home. Yeah, it's been a wonderful experience. I see there's so many fantastic musicians and artists, and it's just a great vibe, great energy, and I really look forward to seeing the performance of dancers here. Have you seen any Bollywood movies and you could relate to it? I have. It's been a while since I've seen them, but I really love seeing dancers and artists, and I really love being a part of the energy and the greater community here. Khao piyo ऐश करो मित्रों. You know, we love Bollywood, we love Hindustan, and we love food, music, and dance. And I love Canadian government that they are more appreciate those people who are in culture, food, and साड़ी तो हो गई बल्ले बल्ले, because ये लोग हमें बहुत बढ़ावा देते हैं इस तरीके के फेस्टिवल्स के लिए, and I'm lucky that I'm here today. Experience बहुत अच्छा रहा. Every year we look forward coming here, and we really enjoy and look forward and wait for this event, you know, every year, and we always have good fun. We come with our friends and always had a blast. So yeah, we are happy. It's a great opportunity to meet all the talent, because when they perform, they're busy, and actually to share their experiences, how they got there, and it's a great platform that we get to interact with them. So I think Monster Mashup is doing an amazing job, and we look forward to it every year. Bollywood, in the sense, we are from India, right? Bollywood, you can say, is in our blood. We have grown up watching Bollywood. We are crazy about Bollywood. We love Bollywood, and always any Bollywood event, we look forward coming there, and we enjoy our time here. We get a piece of India here, because Bollywood is like the chini and shakkar. No matter what we do, it's always a discussion of the table, right? Absolutely. I think any excitement है कि अपने culture display हो रहे हैं, अपने artist display हो रहे हैं, ते South Asians वास्ते एक free, you know, event हैगा जिधे च बड़े बड़े कलाकार, but also I think community ਨੂੰ get together ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, summer enjoy ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ. So really excited to be here. Bollywood ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਯਾਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ. ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਦਿਲਵਾਲੇ ਦੁਲਹਨੀਆਂ ਲੈ ਜਾਏਂਗੇ पोस्टर देखा तो सब तो पहले ਉਹਦੇ ਨਾਲ फोटो खिंचवाई. You know, we grew up with these iconic songs, you know, movies, and it brings back the memories of India, and we can still enjoy कि Bollywood ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ हर जगह, चाहे से Canada चाहे से India. You know what, I've been a part of it for the last 10 years. I've always come out to these events, and the grand opening red carpet event is the #1 event in the city, and I want to congratulate them for doing this every year, and the performance that they have is unbelievable. ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੌਰਨ ਐਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਤੇ ਐਕਟਿੰਗ ਹੱਥ ਦੇ ਹੱਥ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ. ਵਧੀਆ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਟੈਰਿਫ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜੌਬਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖਟਾਸ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕੀਏ. ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਵਕਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਜ਼ ਪੀ ਖਜ਼ੈਰੋ ਟਾਕਡ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ. Any Bollywood memories you have? Any Bollywood movies you have watched? I have watched them, but I really can't remember their names of the movies. But they're, you know what?
It's the culture, and that's the nice thing about learning about everybody's culture, and I find that so important to make Canada the country that it is today. I think, festivals of this nature are so important for the community, and that's what we at RBC really value, is communities across Canada that get together to celebrate, their cultures. I think that this is such a phenomenal event to promote that, and I'm so happy to have been invited to this event. I think they're always required to bring communities together. I think celebrating roots, culture, song, dance, arts is such a necessity. It builds a sense of belonging for who we are, and it helps to inform and educate other communities around Canada as to, this beautiful, diverse diaspora that we have. So it's absolutely part of the fabric of who we are as Canadians, and I really love to see these kinds of events. It's very nice to see. I've actually known Vikas and Seema for a long, long time, and this is their 15th year anniversary. So it's a proud moment, a big accomplishment for them. It's always nice to see our community flourishing and, nice things happening. It's a great concert, and I'm looking forward to it. How about yourself? I'm 26 years old. I think this is the 15th year anniversary of Bollywood Monster Mashup. I used to come here all the time when I was a kid. So being around this community is always very fun and vibrant. Yeah, he's been coming with me since he was little, so it's very nice to be here. And it's a lovely festival.